channel once again. Today I'm back with another interesting video where I would be replacing the brake shoes of my bike. Today I'll be using Hindi as well क्योंकि भाई बहुतों ने बोला है कि हिंदी में भी बोलिए. So it would be interesting, I hope so, and it would be easy for people to understand my video. हर चीज़ बताई जाएगी भैया. Tools आखिर चाहिए क्या? Ring spanners. So we need ring spanners size 8 and 9. Then there is 10 and 11, 16 and 17. There is 13 and 12, and then the big one 22 and 20. Screwdriver just in case, and a plier. I don't have a proper one, so this would work fine. इन सब चीज़ों से हमारा काम हो जाना चाहिए. अगर कुछ और चीज़ें होगा तो मैं वीडियो के दौरान बताऊंगा. 8 and 7 spanner. I will be removing this nut behind exhaust. The size is 8, by the way, 8. There it goes. Take care of your hand. There's a cotter pin here. It can hurt your finger. Side, and we remove all 3 of them, here, here and here. We would go ahead and disconnect the brake line and the retainer of the shoe holder. I don't know what it is called. तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि पहले जो ब्रेक को रिटेन करने वाला या ब्रेक को एक्टिवेट करने वाला जो रॉड है हम उसको डिस्कनेक्ट करेंगे, और जहाँ पे ब्रेक पैड्स लगे होते हैं उसका एक रिटेनर रॉड होता है जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, उसको हम डिस्कनेक्ट करेंगे. ये तो करने के बाद हम एक्सेल नट्स निकालेंगे. सो आफ्टर रिमूविंग द ब्रेक एक्टिवेशन रॉड एंड द रिटेनर रॉड, आई वुड बी रिमूविंग द एक्सेल नट. ब्रेक इज एक्टिवेटेड विद दिस रॉड. सो बेसिकली दिस मूव्स. ये रॉड जो है ये ब्रेक को अप्लाई करता है, एक्टिवेट करता है इस रॉड, और रिटेन करने वाले ये रॉड होता है जो ब्रेक शू को पकड़ने वाले चीज़ को अपनी जगह पे रखता है. ये जो बड़ा सा प्लेट है इसको. बॉक्स पैनल टू रिमूव द ब्रेक एक्टिवेशन और द एडजस्टर, आई कैन से दिस इज द एडजस्टर विद विच यू एडजस्ट हाउ टाइट द रियर ब्रेक कैन बी. इसी से एडजस्ट करते हैं रियर ब्रेक को. मैं इसको निकालने जा रहा हूँ. Easy. Take some time and patience and strength. And it's out. ये आ गया. Now we will release this spring. There it goes. ये भी बाहर आ गया. इसको भी संभाल के रखिए. ये दो चीज़ों को you should take care of is that spring, and there is a washer behind. स्प्रिंग का थोड़ा ध्यान रखिए. इसको निकाल लीजिए, वॉशर को भी निकाल लीजिए. Take both of them out and keep them safe. Place them somewhere safely. Clean them and lubricate them before you put them back. So all these are to be lubricated and kept safe. This is the retainer and it has a cotter pin. Take care while removing the cotter pin. Don't lose the cotter pin. We would be reusing it. Which is a size 12. Use a ring spanner always so that you do not miss the thread or damage the head. There you go. वॉशर और नट दोनों को सेफली रखिए. गुम नहीं होना चाहिए. रिटेनर भी निकल गया. अब देयर इज अ बोल्ट बिहाइंड. पीछे से बोल्ट को भी बाहर निकाल लीजिए. रॉड को थोड़ा नीचे पुश कर दीजिए. ये आपका हो गया फ्री. रिटेनर निकल चुका है.
अब हम एक्सल नट निकालेंगे. सो विल गो अहेड एंड रिमूव द एक्सल नट. देयर इज अ कॉटर पिन है इस पे, इसको निकालना पड़ेगा. वी गॉट टू रिमूव इट सेफली एंड रिटेन इट बिकॉज आई डोंट हैव एक्स्ट्रा कॉटर पिन विथ मी. सो आई विल क्विकली शो हाउ टू रिमूव इट. On the left hand side of the bike you'd need a 17 size ring spanner to hold the axle nut from rotating. लेफ्ट साइड में 17 नंबर का स्पैन करेंगे इस एक्सल नट को घूमने से बचाने के लिए, और राइट हैंड साइड से अब 22 नंबर का स्पैनर यूज़ करेंगे इस एक्सल नट को निकालने के लिए. One thing you should take care is about this spacer. You should know which side it sits. कौन से तरफ कौन सा स्पेसर बैठता है, इसका ध्यान रखिएगा. और इसको साफ़ भी आप कर सकते हैं, इसमें बहुत गंदगी होती है. And next thing is we'll push this nut from this side by hitting it with a spanner lightly. ज़्यादा तेज़ मत मारिएगा क्योंकि अगर ये हेड डैमेज हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी हमें. Don't hit it too hard, just a light tap. You can also cushion it with a cloth, a rag, which I cannot do because I'm using one hand for my camera. You can also see this has come loose. ये ढीला हो चुका है. ये आप जो देख रहे हैं ये कुछ नहीं है, ये बस एक 660 का लेयर है जो मैंने लगाया था क्योंकि मेरा मड फ्लैप से साउंड आता था. This is a layer of 660 basically. I had put this on to cushion my mud flap which was sounding bad on potholes. रिमूव ऑफ द रिटेनर्स. अब जो व्हील बाहर आ गया है तो हम इस प्लेट को निकालेंगे. ये आ गया आपके ब्रेक शूज़. I would also like to clean my drum. So what I'll do is I'll pull off the chain, the drive chain, and I'll pull off the wheel. So what next? We have to undo the 2 springs and remove the brake shoes. Just note one thing that the spring, one side it's outward and one side it's inward. एक तरफ से बाहर से दिया है, एक तरफ से अंदर से दिया है. So we need to keep that in mind and do the job. I hope it is visible on the camera. Removing it is a rather easier thing to do. So it comes off. Two springs of 2 types. What you can see here is both the hooks face towards the same side in one of them and it is the reverse other one. So now what I figured out is, sorry I just dropped one. Now you can clearly see that there's a place for the spring to pass through. So the spring would come from behind and through this. In case of this however, the spring comes from behind. The space is behind the shoes. So that kind of explains that the spring that has both the hooks on one side will go inside this part.
However, the spring that has the hooks opposite to one another will go to this part. This is the mating surface. Now I have both the pads aligned, not aligned, but the springs in place. I'll align them. Now that they're aligned, now you can go ahead and fix it onto this plate. There it goes. Applying some grease onto this mating surface and this place, but I don't have grease, so I'll be using a chain lube instead. Grease would have been better, but now that I don't have an option, so I'll be getting the job done by the chain lube itself. Make sure you do not apply any kind of lubricant onto the surface of the brake shoes. The lubrication thing is done fine. You can still see that it has not set properly. Now it has set properly. So this surface is now sitting properly. This is done as well. I'll wipe off all the excess lube that is inside, and then we can start fixing it back. So the function of the brake is quite smooth now. I can feel the smoothness. I've also cleaned the spacers on both the sides. I have cleaned them well with petrol. I'll be applying the same chain lube onto these before fixing it back. It helps in lubrication. What I'm going to start now is to put back everything in order. So this goes to the right, this goes to the left. The brake shoes are replaced now successfully. I have lubed them, the mating points well, so that solves the issue there. Cleaned this part, lubed the bearing, which was not required, but then just for the sake of it I just did it. So now I'll put everything back. The next thing I'll be doing is to lubricate the axle nut. इस axle nut को भी हम lubricate करेंगे. इस पे थोड़ा ऑयल लगा देंगे, chain lube. और क्योंकि मेरे पास ग्रीस नहीं, इसलिए मैं चेन ल्यूब यूज़ कर रहा हूँ. लेकिन अगर आपके पास ग्रीस है तो प्लीज़ ग्रीस यूज़ कीजिए, क्योंकि वो ज़्यादा दिन तक चलता है. और इसको ग्रीस करने के बाद, इसको ल्यूब करने के बाद हम सब कुछ वापस लगाएंगे. दिस गोज़ ऑन टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बाइक. आई जस्ट फिक्स इट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, फॉलोड बाय दिस प्रॉकेट. बेसिकली इट वुड सिट दिस वे. One quick note, there are two washers that goes into the axle nut, one on each side, so you slide in one and then put back the axle nut. I hope that's visible. First what we have to do is, I have not tightened up the axle nut fully. पूरी तरीके से इस axle nut को हमने टाइट नहीं किया है. पहले ब्रेक आर्म को लगा लेंगे, जिसके लिए कि आपको ये सिलेंड्रिकल चीज़ इसके अंदर डालना है. ये आ गया आपका ब्रेक आर्म. स्प्रिंग को लगाएंगे, उसके पहले ये वॉशर अंदर जाता है. सो वी पुट द वॉशर इनसाइड फर्स्ट, फॉलोड बाय द स्प्रिंग. And then we put the arm inside here. There it goes. के बाद हम रिटेनर नट लगा देंगे. Here's the bolt. There it goes. I put up the washer as well, followed by the nut. Now you can tighten up the axle nut. The desired torque.